आज दिनांक 20 जुलाई 2025 को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के निर्देशानुसार कोटा, बारां व झालावाड़ न्याय क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों की प्रथम त्रैमासिक वर्कशॉप 2025 कोटा मुख्यालय पर कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। वर्कशॉप के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति श्रीमान दिनेश मेहता साहब, राजस्थान उच्च न्यायालय रहे। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने दीप प्रज्वल कर वर्कशॉप का शुभारंभ किया। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर द्वारा निर्देशित दांडिक एवं सिविल लॉ से संबंधित 2 विषयों पर वर्कशॉप में विचार व्यक्त किए गए। माननीय सत्यनारायण व्यास जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा ने स्वागत उद्बोधन दिया एवं श्रीमान आलोक सुरोलिया जिला एवं सेशन न्यायाधीश झालावाड़ एवं श्रीमान अशोक चौधरी जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां वर्कशॉप में उपस्थित रहे। श्रीमान दिशा परियार अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, श्रीमती विनय जयपुरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट क्रम 3 कोटा, श्रीमती तनिक्षा ऋषि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण कोटा, श्रीमती शहनाज खान न्यायिक मजिस्ट्रेट भवानी मंडी जिला झालावाड़, श्री लोकेंद्र चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज जिला बारां, श्रीमती रिया शेखावत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 3 उत्तर कोटा, नेहा मौर्य सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर कोटा, श्रीमान सिद्धांत शर्मा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अंता जिला बारां, अंजू कुमारी सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खानपुर जिला झालावाड़, नेहा वर्मा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दिगौद जिला कोटा तथा मानसी राजपूत सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ एवं श्री S बिश्नोई सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा जिला कोटा ने निर्धारित विषयों पर विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमान दिनेश मेहता साहब ने वर्कशॉप के बिंदुओं पर विस्तृत रूप से विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया। श्रीमान अक्षय तांबी सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण कोटा एवं श्रीमती कृतिका शेखावत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2 उत्तर कोटा द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। अंत में श्रीमान आजम खान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा ने धन्यवाद ज्ञापित किया एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यशाला का समापन हुआ। From the date of the order or within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court on sufficient cause being shown by the drawer of the check. In the case where the drawer is acquitted, then the payee may be directed to refund the entire amount of the interim compensation along with the RBI's guideline of the interest rate. This provision is discretionary in nature and court can choose whether or not to provide the interim compensation. The next is compounding of the offences, which is provided under section 147. In the case of Damodar S. Prabhu versus Syed Blal, it was held in this case that the compounding is permissible at any stage under section 147 of the NI Act. There is one more provision provided under the NI Act, which is discharge of the accused. In the case of Metals and Instrument Private Limited and another versus Kanchan Mehta, in this case it was held that courts can at their own discretion close the proceeding for check dishonor even without the complainant's consent, provided that the accused has paid adequate compensation to the complainant. In Raj Reddy Kallam versus State of Haryana, now stage. Before Just we have to go through the provision. 143, what does it say? Because these are the questions where we often are.
not standing anything contained in the code of criminal procedure, the court trying an offence among 38 may order or drive the check to pay interim compensation to the complainant in a summary trial or summons case where he pleads not guilty to the accusation made in the complaint or in another case upon framing of the charges. So what is the difference between clause A and clause B? Clause A says in a summary trial or summons case where he pleads not guilty to the accusation made in the complaint and in any other case upon framing of the charges. So either at the time of taking cognizance or at the time of framing of charges. So before taking cognizance, we normally should not ask the drawer of the check or the accused to pay the interim compensation because that stage has not come. So first hearing, we as a court should not pass order of interim compensation because one of the cases came before me. So that was the stage, first stage भी उसको कह देगा आपका interim compensation. Then is it mandatory for the trial court? So can anybody tell us the judgment if you remember or year? I don't mind. Because the word used is may. Compulsory नहीं है. Because word and जैसे आप अपील का कह रहे थे. What is the because in 148 is the provision. Because 148 uses the word shall. If we compare 143A with 148, that is a shall. Power of appellate court to order payment pending appeal against conviction. Notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure, in an appeal by. Yeah, I have small questions to whosoever wants to answer. I just asked the training officers that are there. Suppose the interim compensation under section 143 is to be paid. What is the stage when you will ask the drawer of the check to pay the interim compensation? Suppose the notice summons are served and on the first day he appears. Whether will you ask them to ask the drawer of the check or the accused to pay the interim compensation at the very stage when the first time appears? Any training officer? Because 143 is asks or talks about interim compensation. What is the stage? Anyway, any officer? What is the stage? अपील की स्टेज पे सर अपील 143 जो प्री ट्रायल स्टेज सब प्री ट्रायल स्टेज ट्रायल में यस नहीं कब व्हाट इज द स्टेज सपोज समन सर होके आ गए तो उसको फर्स्ट स्टेज पे ही कर दोगे तमील के बाद ही व्हाट इज द स्टेज आरोप सारांश के बाद या कॉग्निजेंस के बाद आरोप सारांश अब जैसे yes Usually, after something of the accused enters the court, and thereafter the complainant makes an application for 143A. Thereafter, we proceed to give an opportunity to the accused to answer, and thereafter the answer comes, and thereafter we decide whether the interim compensation is to be given to the complainant or what about of interim compensation is to be given. suppose complainant asked for the first time that please